लेके खड़े हो जाना उधर यार, खड़े हो जाना। बाद में जब आए तो खड़े हो जाना। अबे एलसीडी एलसीडी सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, गोविंदा 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 सर मैं क्या करूं, पीछे से हट। एक इधर ये गलत है। क्या इंटरेस्ट होगा, कितनी बॉक्सिंग पर आधारित है, कितनी नहीं है, वो अंदर जाके पता चलेगा। बट आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स अ ग्रेट फिल्म व्हिच इट लुक्स लाइक। So far, what has actually captured your interest in the movie? Well, the songs are great. The fact that Sohail is there and he's a great friend, so I'm here for that more than anything else. Very few sports films are made in India. Sorry? Very few sports films are made in India. Yeah. I think it's high time there are more films made because that's probably one of the reasons sports should also do well. Thank you. Yeah, Neha, one सिल्वेस्टर स्टैलोन रॉकी किस्म की फिल्म होने वाली है ना, एंजॉयड सिंग रॉकी, तो ये भी अच्छी होने वाली पिक्चर। अच्छा, फिर भी प्रोमो से क्या लगता है आपको, क्या है लुक सोहेल के? हाँ, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि सोहेल विल बी द नेक्स्ट सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं टॉकिंग समथिंग अबाउट द स्पोर्ट्स फिल्म, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स नॉर्मली यू प्ले, यू हैव? मैं रोज सुबह स्विमिंग करने जाता हूँ एंड मैं स्विमिंग बहुत एंजॉय करता हूँ, और आजकल मैं हाथी का पोलो खेलने लगा हूँ, एलिफेंट पोलो। सो दीज आर गेम्स आई एंजॉय प्लेइंग। one line about Neha Dhupia looks and she already there with Salman, now she's coming with Sohail. What have you to say about it? All in the family. Yeah, but she is a good looking girl. थोड़ी बहुत ऐश्वर्या राय की तरह लगती है, and I think she should be good in the film.